कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स reflects the average increase in the cost of the commodities consumed by a class of people so that they can maintain the same standard of living in the current year as in the base year. कह रहा मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 116 है, इसका मतलब होता है कि अगर आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं तो बेस ईयर में अगर आप 100 रुपए खर्च करते थे तो करंट ईयर में आपको 116 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कहने का मतलब है उतनी कंजम्पशन मेंटेन करने के लिए अब इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि देयर हैज बीन एन इन्फ्लेशन ऑफ 16%. तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है. They are designed to measure the effect of change in prices of a basket of goods and services on purchasing power of a particular section of the society during any given period of time. During any given period, with respect to a fixed period of time, the current year is being compared with a specific base year. Consumer price index are also known as cost of living index, retail price index, price of living index numbers. We are studying the purchasing change in the effect of change in prices on the purchasing power of a particular section of the commodity of the community. Particular section क्यों बोल रहे हैं वो? Cost of living index, consumer price index, consumer पे ही फोकस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स उनकी परचेजिंग पावर पे. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स अलग है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डिफरेंट नेम्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स. व्हाट इज द नीड फॉर consumer price index? The need for constructing consumer price index arises because general index numbers do not highlight the effect of rise or fall in the prices of various commodities consumed by different classes of people on their cost of living. कह रहा है उनका इम्पैक्ट थोड़ी ना स्टडी कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी अदर इंडेक्स नंबर्स, बट हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स में पर्पस डिफाइंड होना चाहिए. तो हर देयर इज नो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर, तो हर एक पर्पस के लिए अलग इंडेक्स नंबर होता है. तो कंज्यूमर का बिहेवियर अगर आपको स्टडी करना है, उनका इम्पैक्ट स्टडी करना है ड्यू टू इन्फ्लेशन, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द मोस्ट सुटेबल. Moreover, different classes of people consume different types of commodities, and even the same type of commodities are not consumed in the same proportion by different classes of people. So, consumer price index, these numbers are constructed separately for different classes of people to study the effect of rise or fall. हम study क्या कर रहे हैं? हम study कर रहे हैं effect. किस चीज का effect? Effect of change in price of different types of commodities. Different CPI for different categories of people. The consumption pattern of rich, poor, and middle class, it varies widely. Also, the consumption habits of the people of the same class differ from place to place. For example, the pattern of expenditure of peon living in Delhi may be different from another peon living in Kerala. Example, the consumer price index helps us in determining the effect of rise and fall in prices on different classes of consumers living in different areas. तो सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट होता है, क्योंकि सबका कंजम्पशन पैटर्न अलग हो सकता है. तो मीनिंग एंड नीड फॉर कंज्यूमर प्राइस